Hello students, it's grade 5, block 21, the maze pattern. The maze pattern. See students, it will help you how to get clear communication and it is play important role in problem solving. Clear communication plays very important role in problem solving. See, it's not your luck, it is not your fate to find your way. Just use your brain. They could be numbers or pretty shapes that guide your way in the maze. अब देखते हैं, ये लेसन को पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से इस लेसन में ये बताया है. अरुण, समीर, तनिया and Parul huddled together to read the piece of paper their teacher had just handed over to them. अब ये ग्रुप में आए और उन्होंने ट्राई किया वो piece of paper जो टीचर ने दिया था. Just then the announcer's excited voice boomed through the loudspeakers nearby. Group from grade 5 is about to enter the maze. Maze मतलब a complicated network of paths between high walls made to confuse people who walk through them. मतलब ऐसा जो देखिए इस तरह से इसे मेज कहेंगे हम कि यहाँ से रास्ता नहीं मिलता है. No group has been able to get through the maze within 5 minutes as yet. Let's see what Arun, Samir, Tanya and Parul can do. अब वहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा था किसी को भी, तो हम देखेंगे कि क्या क्या इन लोगों ने. Smiling and shivering, the group stepped into the maze. Up ahead, they saw the path turn left. Excited, Arun and Tanya ran ahead. Wait, shouted Parul. Hold on, don't you want to discuss what the riddle means? तो इन्होंने स्टार्ट किया मेज पे कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये करना. What's the point? We have only 5 minutes. हमारे पास 5 मिनट हैं इसे सॉल्व करने के. टू फाइंड अवर वे, हमें हमारा रास्ता ढूंढने के लिए. लेट्स जस्ट स्टार्ट रनिंग एंड प्रे वी आर ऑन द राइट पाथ, अरुण शाउटेड बैक. तो अरुण ने कहा कि हमारे पास 5 मिनट है रास्ता ढूंढने के लिए, तो जल्दी से चलो. नो, आई एग्री विथ पारुल, सेड समीर कामली. द रिडल वॉज गिवन टू अस फॉर अ रीजन. I am sure it will help us find our way. Okay, but let's make it quick, said Tanya, anxiously shaking her watch. Once again, देखिए ये डिस्कस कर रहे हैं people, तनिया, पारुल. Once again, the friends huddled together to read the piece of paper in Samir's hand. What does this even mean? Do we have to look out for numbers and shapes in the maze? I can't see anything around us except bare walls. मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ वॉल्स ही दिख रही है जो कवर नहीं है. There are no numbers or shapes to guide our way. I am telling you, this is a waste of time. I bet the other groups wasted their time trying to solve this silly riddle and they lost, said Arun. अब अरुण ने कहा कि इनफैक्ट ये तो कुछ नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस एज द अदर थ्री looked expectantly at Samir. A grin broke out on his face as he continued. I can't solve this myself, you know. We have to put our heads together. All right, let's start walking, but slowly. We shall try to solve it on the way. ये पजल तो हमें रास्ते में ही सॉल्व करते आनी चाहिए और हम सब मिलकर इसे सॉल्व करेंगे. ऐसा किसने कहा? ऐसा समीर ने कहा.
नाउ अभी बच्चों ने तो सॉल्व करने के ठान ली थी पजल, तो वो रास्ते में सॉल्व करना चाहते थे, जबकि उनके पास रास्ता ढूंढने के लिए सिर्फ 5 ही मिनट थे। दे स्ट्रोड मतलब walked with long steps in a specified direction. They stood ahead and turned left. About 15 steps ahead, the path broke off into two. One path now went off to the left and the other to the right. अब 15 मिनट चलने के बाद एक पाथ, उनके सामने दो रास्ते आए, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा था और एक राइट की तरफ। Where do we go now, Samir? Have you solved it yet? asked Tanya. I'm not sure, Arun. Parul, what do you think? asked Samir. If we turn left, we will be moving back towards the entrance. I think we should turn right here, replied Parul. Good thinking, said Arun excitedly as they all ran right. उन्होंने कहा कि हम अगर लेफ्ट में गए तो फिर से एंट्रेंस के पास चले जाएंगे, तो हमें राइट की तरफ जाना चाहिए। Their excitement lasted only 15 steps more, and once again they were faced with the same problem. One left and one right. Which one? Samir, come on. What's the solution? cried Arun. अब 15 मिनट चलने के बाद फिर से उन्हें दो रास्ते सामने आए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब क्या करें? I don't know. We all should be thinking about this together, and calmly replied Samir. We just turn right. Let's try left again, said Tanya, trying to sound calm. She just had checked her watch and they had only 2 minutes left. Hurriedly, they ran up the left path only to come up against a dead end 20 steps later. Turn back. We should have taken the path to the right, said Parul, running now. अब पारुल ने कहा कि हमें राइट में जाना चाहिए, इसलिए टर्न करो बैक में। As they ran back, they realized Samir was still standing at the dead end, staring at the riddle. Samir, come on, cried Tanya. I may have an idea what is the riddle means, said Samir softly. The other three ran back to him. There are no numbers and shapes in the maze. But what do numbers and shapes have in common? They can both be arranged in patterns. There is a pattern that we have to follow, explained Samir. The question now is, what's the pattern? अब वहाँ पर नंबर्स नहीं है, बट हमें वो पैटर्न सॉल्व करना चाहिए, ऐसा समीर ने कहा। लुक एट दिस हेयर, द बॉर्डर. दिस isn't just a border of paper. Our teacher drew this pattern: circle, triangle, triangle, circle, triangle, triangle. Observed Tanya. Of course, cried out Parul. Circle, triangle, triangle, left, right, right. We turned left first, then right, and then we are supposed to be turned right again. The pattern is लेफ्ट राइट राइट रन. अब उन्होंने ये पैटर्न तो दे ढूंढ लिया कि लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट राइट. द फोर फ्रेंड्स emerged from the exit. Emerge means came out into view. Their faces wet and happy to defending applause, and they made it with just 6 seconds to spare. Spare मतलब left over. They heard over the speaker. अब उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, जबकि 6 सेकंड्स बाकी थे, स्पेयर में थे उनके पास, 6 सेकंड बचे हुए थे, तब उन्होंने ये रास्ता ढूंढ लिया. उन्होंने वो पैटर्न जाना किस तरह से है, तो सब मिलकर इसे सॉल्व किया. समीर ने उसे बहुत डीपली थिंक करके सॉल्व किया, कि उस पैटर्न को जाना और सॉल्व किया, और फिर एंडिंग में वो बच्चे बाहर आ गए. तो इस तरह से ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये है, और यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट वी शुड थिंक डीपली एंड कामली व्हेन वी हैव टू सॉल्व एनी puzzle or any exercise in your question paper. You have to think it calmly for 5 minutes. Okay students, I hope you understand the lesson properly. Till our next video, goodbye.